हाय। सॉरी गाइस, वेरी लेट। ऑलमोस्ट हाफ हो गया है यार इसके पहले गेम का। रियली रियली सॉरी अबाउट दिस, बट ये किडाम्बी का भी मैच चालू होने वाला है यार। पर फिलहाल तो ऐसा है कि इट्स किंटिंग इज लीडिंग बाय 10-9। एक पॉइंट का लीड है अभी उनके पास में। और या स्वागत नहीं करोगे हमारा? यार ये कितना फेमस डायलॉग है। 10-9 का स्कोर। रहने दो, श्रीकांत के मैच में आना, वो मैच जल्दी चालू हो जाएगा। कितना टाइम है श्रीकांत के मैच को यार? आई कांट। इट इज ओनली वन मैच आई कैन वॉच एट द टाइम, बट ऑब्वियसली ओ इट्स मुझे किडाम्बी का मैच देखना था। बस नारोका हुज दोनों मैच एक साथ चल रहे हैं यार। पहले हम चलो प्रणॉय का ही देख लेते हैं। पहले प्रणॉय का देखते हैं। प्लीज प्रणॉय भी। हाँ यार, मतलब वी कैन नॉट ऐसा कॉन्सिक्यूटिव हम हार नहीं झेल पाएंगे। तो see I still cannot digest that Sachi is out of all England. ठीक है, that's one thing I still cannot digest. यहाँ पे पहला ब्रेक लेते हुए गिंटिंग। और वहीं अगर हम बात करें दूसरे मैच की तो श्रीकांत ने अभी अपना खाता नहीं खोला है। इट्स 0-2। प्रणॉय प्लीज विन। ठीक है, मैं एचएसपी का मैच सिर्फ अच्छा गिल क्लार्क की कमेंटरी के लिए देख रहा हूँ। अच्छा वो गिल क्लार्क करेंगे क्या? आई जस्ट प्लीज द वॉइस एक बारी फिर। मैंने सच्ची चिराग खान के हरागुन से आपको बहुत ही लेट हो गए हैं। सच्ची सत्विक सच्ची का मैच हो गया है एंड दे हैव लॉस्ट एंड हैव बीन लिस्टेड आउट ऑफ ऑल इंग्लैंड। काफी हार्ट ब्रेकिंग रहा है उनका ये सफर ऑल इंग्लैंड का। यार पर ये तब छोड़ो, ये किडाम्बी व्हाट इज श्रीकांत डूइंग? 0-5। 5 पॉइंट स्ट्रेट निकाल लिए हैं यार। अभी तो गेम चालू हुआ है। Rakshit Singh, ma'am, Prannoy and Srikanth will definitely. I would want both of them to win. Oh, finally, Kidambi Srikanth opened up his account. पर आप ये समझ रहे हो यहाँ पे कि ना किंटिंग इज अ मैन ऑन मिशन आज। क्या? ओह यस भैया, इस बार का तो ऑल इंग्लैंड का विक्टर एक्सेल्सन का रहा है असली न्यूज। तो यस एब्सोल्युटली याकम सिंह विक्टर एक्सेल्सन लॉस्ट बाय यॉन्ग टुडे। तो भाई इस बार तो विक्टर एक्सेल्सन को थोड़ा धक्का लगा है। नहीं, लक्ष्य के पापा नहीं है उसके कोचेस। विमल कुमार आए हैं उनके साथ। यस। 11-12 सिर्फ एक पॉइंट की लीड रह गई है यहाँ पे गिंटिंग और नॉय के बीच में। तो यार ये किदाम्बी श्रीकांत वाला देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो रहा है। तो कांट नॉट विथ हिम। तो जस्ट होप कि यहाँ से हमारे दोनों मैचेस निकल जाएं, मतलब इन फेवर निकल जाएं। सही सही। अरे नाम नहीं आता है गिंटिंग का यहाँ पे। वेरी वियर्ड। तेरह यार, मतलब लीड नहीं निकाल पा रहा है। एक्चुअली बात क्या है ना कि वो लीड नहीं निकाल पा रहा है यहाँ पे एचएसपी बिल्कुल ही। जस्ट ओ माय स्ट्रीम स्टक। ओ माय गॉड, व्हाई इज माय स्ट्रीम स्टक? चलो वापस आते 13 ऑल। डर का माहौल। डर का माहौल तो यहाँ पे किडाम्बी श्रीकांत ने बना के रखा है भाई। क्या कर रहे हैं किडाम्बी श्रीकांत हमारे? 2-7 गेम चालू हुआ है। सिर्फ 3 मिनट हुए हैं गेम में और आप देखें 3 7 फाइनल में 1 पॉइंट और। कम ऑन इंडिया। लक्ष्य के कोरियन कोच का क्या हुआ यार? ही इज आउट ऑफ न्यूज राइट नाउ। उस पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं आई है। तो हम भी यही सोच रहे हैं कहाँ है। हाँ
योंग इज बहुत सेट। नहीं नहीं, आपसे ये प्रीतीश ने जो कहा है वो सही है, योंग को हराए हैं कॉमनवेल्थ के फाइनल्स में, सेन ने हराया है। आई थिंक इट वाज जस्ट अ वेरी 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 गुड डे फॉर योंग। वैसे भी ऐसे ही होता है, विक्टर एक्सेल्सन से कभी लो के न्यू से हारे हो, लाइक someone defeating Victor Excelson, that's absolutely the guy is in form, but Sen is always better. यार किडाम्बी का तो क्या कहें, मतलब जब तक गेम खत्म नहीं होगा ना तब तक मैं मानूंगी नहीं कि वो जीते हैं, क्योंकि ऐसी शुरू के, या मैं तो शुरुआत के 5 स्ट्रेट पॉइंट्स देख के मुझे थोड़ी सी घबराहट हो गई थी, मैंने बोला ये क्या किया है, व्हाई डिड ही डू व्हाट डिड ही डू। तो चैलेंज दिया है यहाँ पे प्रणॉय ने, देखते हैं। CWG is low level, bro. Saket, Young just defeated Victor Excelson, and Young reached to the final of Commonwealth Games. What are you talking about? It's good for men singles category because losing some matches. हाँ मतलब कभी कभी हो जाता है, and this challenge obviously goes in favor of HSP. So 15-14. और आप ये ना भूले कि जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों 2 सालों में विक्टर एक्सेल्सन को हराया है वो दोनों कॉमनवेल्थ नेशंस में खेलते हैं। ठीक है। श्रीकांत में एक था। श्रीकांत ने देखो, श्रीकांत, ओ माय गॉड, ओके जस्ट 2 पॉइंट लीड नाउ। कर लेंगे किदाम्बी श्रीकांत इस बारी। किदाम्बी श्रीकांत, लेट्स गो, लेट्स गो। अरे, अरे यार साकेत यार, आई जस्ट लेट प्रतीश हैंडल दैट। अब मैच देखते हैं, 15 ऑल। यार एक बार ही आप लीड निकालते हो और फिर आप उसको बराबर भी कर देते हो, वेरी गुड, लाइक लिटरली वेरी गुड। It will be important for India to win these matches today. Because now we have like absolute legit chance now that Victor Excelsen's out. क्योंकि देखो हम, we consider him as a threat, right? I like the because everyone considers him as a threat because he's such a good player. But someone like Young has made it easier for us to not not actually feel threatened by Victor Excelsen. Sorry, got lost. पर आज जिस तरीके से इवन लक्ष्य सेन वाज humbled by it basically was out of लक्ष्य सेन was out of form. Let's just accept that because एंडर्स ने आज अच्छा खेला है, तो वो भी एक बात है। नेट पे मार दे यार HSP, it's like the errors that usually humbles HSP। चलो अभी फिलहाल 1 पॉइंट का लीड है हमारे पास, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा हमें ये। गिंटिंग इज समवन दैट वी कैन एक्चुअली विन अगेंस्ट, ठीक है। और हम हराए हैं, HSP हराए भी हैं गिंटिंग को इस साल ही। तो नो, इट वाज नॉट गिंटिंग, इट वाज लीज यार, समवन करेक्टेड मी। एशियन चैंपियनशिप बहुत ही प्यारा शॉट यहाँ पे HSP का, लाइक ही डिड इवन लुक एट इट। शॉट मारने के बाद, यार इज दिस द कोच, इज इट गुरु साहिब, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कोच। Kodai is in really bad form in last tournament, so the kid has a chance. What kid? Just because, don't call him kid. But it doesn't look like a Doi Naraoka is, Kodai Naraoka is in out of form right now because he literally broke into the first half. But let's believe, yes. क्या किसने उसका नाम लिया? पैर तेलुगु मलेशिया का प्लेयर के तरह कब खेलेगा विकी, प्लीज गिव मी होप। यार हम खुद भी उसी चीज का वेट कर रहे हैं। फिलहाल तो HSP अच्छा खेल रहे थे, देखे दोस्तों आप, हो जाएगा, सेंड भी खेल लेंगे। अगर आपको उम्मीद ही चाहिए तो उम्मीद देने में क्या तकलीफ है, उम्मीद तो आप पांडे, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है उस चीज में। 19-16, लेट्स गो, लेट्स गो। HSP has been smooth on the court today, ऐसे अटक नहीं रहे हैं वो, यूजुअली जो होता है उनके साथ में, बट लुक्स गुड। नेट पे ओहो ओहो ओहो,
यार थोड़ा सा गलत खेल गया वो शॉट। एचएसपी डिड क्रॉस द नेट। लॉल। तो हो जाएगा, हो जाएगा। हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए ये वाला गेम निकालने के लिए। नोटिस किडाम्बी, किडाम्बी श्रीकांत 7-11। थोड़ा कवर करो यार, काफी दूर हो रहे हैं हम। मतलब मैं आई just want both of these guys to win obviously, but देखते हैं, देखते हैं। जिस हिसाब से किदाम्बी का और कोडाई का मैच चालू हुआ है, वो ज्यादा उम्मीद दिए नहीं है हमें। आज तारीख क्या है? 16 मार्च है। 17-19, सिर्फ 2 का डिफरेंस रह गया है यहाँ पे, 2 पॉइंट का लीड का। दैट्स अ वेरी क्रूशियल लीड, जस्ट सो वेरी क्रूशियल। तो राइट यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा डाउन द लाइन स्मैश है जेसी का। काफी काफी अच्छा स्मैश। नाइस। एंड इट्स 8-13। या मुझे ये है कि किडाम्बी क्या इस मैच में डबल, इस एटलीस्ट इस गेम में डबल डिजिट क्रॉस कर पाएंगे। बट 20-18 हो रहा है यहाँ पे स्कोर, तो सिर्फ 1 पॉइंट दूर हम ये वाला गेम रैप अप करने में। See, Prannoy is playing against Ginting how we expected him to play, honestly. Would have been a surprise if Kidambi Srikanth played like this against Kodai Naraoka. क्या हो गया? Why have to call Srikanth a kid? Sports only. Let's go, let's go. अगर किडाम्बी ये सेट हार गया तो रबर सेट की उम्मीद मत रखना। देखो ये फर्स्ट गेम तो वो हार रहा है। यार इसने क्या कवर किया है? प्लीज ऑल मत करना। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ थ्रिलर वी वांट इन द वेरी फर्स्ट गेम। कम ऑन एचएसपी, लेट्स गो, लेट्स गो एचएसपी। बहुत आगे आ गया तो हो गया। ऑल कर दिया भाई, ऑल कर दिया उसने। 20 ऑल। पहला गेम नहीं चाहते थे हम ऐसा। मतलब पहला, अब दूसरा एक्सपेक्ट कर लो यार, पर नॉट गुड, नॉट गुड। लाइफ किधर मिलेगा? आप दिव्यांश से जाके देखें ना, जियो सिनेमास पे। हाँ, वूट पे भी चेक कर लें। Next time be able to qualify for Olympics, और ये मतलब क्या आता है? नॉट स्टे एट होम, स्टे एट होम। मतलब इमोजी है अगर ये किसी तरीके का, तो सिर्फ नाम लिखा आ रहा है। किडाम्बी से हो मत लगाना, नहीं तो फिर से रोना पड़ेगा। मैं तो नहीं लगा रही हूँ। मतलब अरे यार ये क्या खेल रहे हैं? वो छोड़ो, आप पहले एचएस पे गिंटिंग को देखो यार भाई। मुझे लगा था ये गेम में पहला गेम तो एटलीस्ट को डायरेक्टली निकाल लेंगे। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल गो इनटू अ थ्रिलर ऑलरेडी। बट लुक एट श्रीकांत इज इंचिंग क्लोजर। चलो खत्म। पहला गेम निकाल लिए हैं गिंटिंग। पूरा पूरा का पूरा गेम डोमिनेट करने का दिस इज वाज एचएसपी गेम। यार वाइड मार दिया था यार। हाउस द जोश, व्हाट जोश ब्रो। ब्रो इज प्लेइंग लाइक 11-14 श्रेया, क्या करें हम? नंदा गया। एचएसपी हमेशा ऐश ही करता है। जीते तो जीते, जीतते जीतते हार जाता है यार। ये तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी, के साथ। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये मोमेंट जस्ट बी लाइक ये हमारा स्टाइल। ये बता, आपका ये स्टाइल हमें हमें हर बारी हार्ट अटैक क्यों देता है यार? नींद आएगी आज। बढ़िया नींद आएगी यार। तो 2018 से 2022 मॉडल। यार वो नहीं, ऐसी आप
See, in athlete's personal life is his or her personal life. हम उस पे कमेंट नहीं करते, ठीक है? जब तक वो इंडिया के लिए खेल रहा है तब तक दे आर आवर बिजनेस, पर वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, दैट्स नॉट आवर बिजनेस, ठीक है? Quite what a day for India. It's a disaster. I mean, it's a great day for Teresa and Gayatri individually, but not exactly a very great day for how Indian शटलर्स जिनसे हम लोगों को उम्मीद थी वो हाउ दे आर परफॉर्मिंग, डिजास्टर, डिजास्टर। देखो यार किडाम्बी को देखो तुम, 13-14, कौन कह रहा था बच्चा किडाम्बी को? कहाँ से कहाँ आ गए हैं हम, जरा देखें। अभी एचएसपी का मैच खत्म होगा तो हम किडाम्बी का देखेंगे, नहीं तो हाइलाइट्स भी देखेंगे। अब आप देखो, लेट्स गो श्रीकांत, लेट्स गो। 13-14 हो गया है स्कोर अभी, जस्ट अ पॉइंट अवे फ्रॉम एक्चुअली इक्वलाइजिंग इट। आई रियली होप जस्ट इक्वलाइज इट। श्रीकांत कम बैक। ओह, जल्दी कह दिया आपने। 13-15 now. Prannoy has difficulty losing the games. Finish नहीं कर पाते हैं. That's something that I agree with. He's not able to like finish it properly. Or that's how we put it. चलो सेकेंड गेम में तो मत देखो, नजर लग जाएगी। 140 करोड़ लोग और नजर भी सिर्फ हमारी लगेगी यार, क्या बात हुई है? इट्स अ शॉर्ट फ्रॉम, अच्छा ऐसा है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रेट पॉइंट्स निकाले हैं एचएसपी ने इन द वेरी फर्स्ट सेट। आई थिंक देयर इज समथिंग विद द ड्रिफ्ट, ये यार एक साइड वाला तकलीफ तो देता है, ठीक है? दिस साइड को थोड़ा ड्रिफ्ट है, मैं किसी को नहीं लगा रही हूँ नजर। Why the hell all three matches we lost for from winning position? I'm trying to remember सच्ची वाला मैच, we could have won it actually. लक्ष्य वाला never stood a chance. लक्ष्य तो never stood a chance. तो वो एक अलग बात है, because he was not, नहीं हो रहा था लक्ष्य से। ऐसा वाला है 16-14 है अभी, दो का भी यार सेकेंड आखिरी का लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना उसमें गेम जाता है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट फ्रॉम देयर। देखते हैं, लेट्स बी पॉजिटिव। आई नो यार, ये बहुत पीछे से लिया था यार एचएसपी ने, व्हाट इज ही डूइंग? 3-1 अभी 2 पॉइंट की लीड है हमारे पास। नॉट ऑल आर वाचिंग सेंसेशनल मैचेस, क्या करें यार? पीपल डू एक्चुअली फील डिमोटिवेटेड आफ्टर हाउ ऐसा मैचेस हम देखें उसके बाद तो। यार ये लीड निकाल के उसके बाद हारना, अखर जाती है। आई वांटेड सच्ची टू विन, आई मीन। और रही बात तो सेन की, दैट अगेन आई एम जस्ट सेइंग he didn't stand a chance at least today। हार भी गए तो क्या, ऑल इंग्लैंड टाइप इवेंट में सभी स्ट्रांग ही होते हैं यार। ऑल इंग्लैंड के नाम से ही लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, जितना मुझे समझ में आया है। और ये यहाँ पे यार मुझे ना इस मैच में बस ये है कि सेकेंड गेम में ये है कि एचएसपी पूरा गेम डोमिनेट करेगा और आखिरी में जाके फिनिश नहीं करेगा। दैट विल बी अ वेरी वेरी क्या कहते हो, इट विल बी डिजास्टर्स। हाय हाय, सब हाय इंद्राज जी, सब लॉन्ग टाइम। आई नो वर यू फॉलोइंग बीजेटी, व्हाट इज बीजीटी, सॉरी बीजीटी। थोड़ा कांट यू ब्रिंग मोटिवेशनल स्पीकर ड्यूरिंग स्टेज यार? मैं मोटिवेशन दे सकती हूँ वैसे, आप चाहे तो मैं बात कर सकती हूँ मोटिवेशन की। व्हाई डू यू नीड अ मोटिवेशनल स्पीकर ड्यूरिंग अ स्ट्रीम, अ बैडी स्ट्रीम? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, अच्छा वो नहीं, आई हैव नॉट बीन, मतलब नहीं मैं नहीं देख रही हूँ क्रिकेट इस बारी, को कुछ नहीं देखते हैं, थोड़े व्यस्त रहे हैं। नो बीजेटी, बीजीटी सॉरी। मतलब मुझे पता है क्या हो रहा है, लाइक वेरी सुपरफिशियली, बट आई एम नॉट वाचिंग इट। बैडमिंटन प्लेयर्स को कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा खेलते हैं क्रिकेट। ये देखो एक मैच तो हारा, कितना प्रोसेस किया। Hi Viti, हाय, which match are you watching? so I'm watching HSP right now. If you are watching HSP, then I'll just go jump to Kidambi because I'm he's doing. watching Naraoka versus Srikanth, so you continue with अरे that. यार,
Let's see how Srikanth is playing. Oh, nice. बाप रे 15. श्रीकांत was doing disastrous पहले 5 पॉइंट वाले तो Yeah, I saw the scoreline here. Yeah. बहुत ही बुरा किया था उसने तो the Son is more good player than Lakshya Sen. He has been doing good. BGT is Bangladesh team. No. I don't know. I don't want to know. कुछ सही नहीं लगा मुझे वहाँ पे. Let's stay positive. Yeah. Well. Naraoka is a very aggressive player. He's shouting after each and every point. Which is uncommon for a Japanese player. And Very it's uncommon. for Srikanth, because if Srikanth plays at a good level, like after he has made that comeback, if he plays on the same level in the second set, तो it will be advantageous to him कि सामने वाला चिल्ला चिल्ला के मतलब पूरा aggressiveness से खेल रहा है तो Srikanth just needs to stay composed. उसका problem are only his errors. वरना इतना masterful stroke play काफी कम players के पास है. I had read somewhere कि Srikanth is one of the most talented badminton players that the world has ever seen, but his only problem has been discipline. Discipline, consistency, because when he is like वो ऐसा उनका है कि अगर वो बिल्कुल भी there are really two things for Srikanth. ठीक है, either he is in form or he is out of form. There's nothing in between. कोई rhythm हाँ, वाली चीज नहीं है. that's the discipline that the interviewer was talking about. I had read it in a book somewhere कि वो ही है कि there has been no one more talented than Srikanth in Indian badminton. That's true. And he has had his moments. 2016 Rio Olympics, Yes. world number 1 in 2017. Yeah, great era उसका तो काफी. I guess But Sindhu has never been world number 1. So she has never. the best she has been is world number 2. And Srikanth on the other hand has been world number 1. What a Yeah, but brilliant match. something that you still ask me ना, I think Sindhu वो कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल करना पड़ता है for you to become world number 1. एक आग होती है, आग नहीं है. And उसमें being world number 1, you have to play a lot of tournaments. So it's better to not be world number 1 rather than win. Ritesh is saying absolutely true that injury came at that time. Wrong time, and even he was very upset about it. Yeah. Hi guys. Hi, hello. चलो पहला गेम तो it went into Kodai's favor 21-17, but I love how he just came back. Srikanth. So the best thing, we have Pritish in the comments. So guys, Pritish is our journalist at the bridge. So we were discussing today that this is the best chance HS Prannoy has because HS Prannoy has always lost in semi-finals and quarter-finals throughout his career. And looking at the draw, we don't have Victor Axelsen anymore. So अगर HS Prannoy ये निकालते हैं, if HS Prannoy wins this match, he will have a much easier part to the final because see against Axelsen everyone has a mental block. NG Zayong is already tired today, so एक बहुत अच्छा chance है HS Prannoy to cap off a career क्योंकि अगर ये जीत लिया ना because he'll see 20 years के intervals में हुआ है पहले 21 साल लगे थे अभी 22 साल ओ लास्ट ईयर भी मैंने बोला था ऐसा कुछ होगा इस I just like you नंबर गेम हो जाएगा यहाँ पे. Yeah, so Gopichand won after Gopichand won after 21 years. 1980 Padukun, 2001 Gopichand, and now 2023 after 22 years HS Prannoy. कर ले यार इस बारी मजा आ जाएगा. See, मेरे हिसाब से तो there is no one HSP on his day cannot defeat. ठीक है. It's just Guru Sai Guru क्या नाम है तो but it doesn't look like that but like पता नहीं. What? Where? Guru Sai the Tariq. यार I think वो उसका कोच तो था इंडिया ओपन में Guru Sai is a former Indian badminton player. I remember that name. When I was small, I used to see him playing. Oh, he's only 33 right now. Okay. But he has started coaching already. So he accompanied Saina Nehwal in India Open. Oh, so he might be here. I am watching Naraoka versus. No, but I don't know. But I don't. He's just young-looking guy, so I'm not sure.
HSB has a better head-to-head record against Lindan. प्रीतिश इज दिस इज माय ट्वीट प्रीतिश मेरी ट्वीट देख के आ रहे हो आप कल मैंने कल ये ट्वीट किया था सी प्रीतिश इज माय ट्विटर फैन so I tweeted this that out of 5 matches they've played Prannoy has won 3 and Lindan has won 2 ऐसा incredible stat लेके आया है ना Prannoy so यार हाँ, HSBC on his day can defeat anyone. एक ने mention भी किया था, someone mentioned in the comments that he's not able to finish the games right. I think that has been a biggest problem. Even in the game 1 यहाँ पे ना, तब भी throughout the game he dominated HSP और आखिरी में जाके सब बराबर हो गए. He was not able to. बस खत्म. starting the second set off here between Naraoka and wow what a smash बहुत enthusiastic है Naraoka and he has done pretty well in recent times so हाँ हाँ. जापान में तो नाराओका पहले has been pretty famous. एक तो उसका ऐसा है कि जब जब मैंने नाराओका के लिए जितने मैचेस देखे, he's always been in the air. There's nothing, मतलब क्या ग्राउंड कोर्ट वोट क्या होता है, उड़ता है वो अच्छे okay से. he has okay so Naraho damn he's only 7 months older to me sorry yeah only 7 months older shit बड़े हो गए Oh my god, नाराओका is just starting. कितना बड़ा करियर है इस बंदे he's का यहाँ 21 से. only so not even 21 2021 yeah बढ़िया बढ़िया मूवमेंट है फ्लुएंट मूवमेंट है काफी ड्यूरासेल बनी है वो Vikashta का श्रीकांत cousin looks like Guru Sai. Hmm. My own cousin Sumit look like okay. Kodai Naraoka is the future absolute. विकास दा तो बहुत भावुक हो जाते कमेंट सेक्शन में नाराव का इस फ्यूचर वगैरह अरे यार आप विकास दा एक दो मैच एक दो टूर्नामेंट देख एक दो 1.5 साल देख लिया फ्यूचर कैसे हो गया है यार Lindan any day. Lindan or each other. Like I'll choose. I mean, the very little it has always been Lindan. वाओ वाओ यार श्रीकांत को टू विन दिस looks very tough to be honest Hmm. नाराव का is I'd literally be play surprised if he is able to take it to the third game. थर्ड गेम तक गया तो तब तक तो फिर नहीं जीत निकाल ही नहीं पाएगा. That is very difficult. Srikanth is throwing everything at him and he's still coming up with some nice shots. अभी जंप स्मैश फोरहैंड पे उन्होंने कन्वर्ट किया नाइस क्राउड एट बर्मिंगम काफी लोग आए हुए Birmingham has always had a good baddie crowd, especially a हाँ huge because Indian of diaspora Hollywood and all. and Sindhu was shown the door so soon. Any views? Sindhu was out of form. That's why she was shown the doors so soon. बस यही है कहानी. कब और HSP यार कोई तो जीतो यार. कोई तो जीतो विथी गेटिंग मतलब इधर desperate consecutive losses यार. someone मतलब texted Srikanth is in Kodai's pocket now if he wins from here he'll be the pocket rocket then uh, but the one there thing was about badminton jerseys is यार ये जापानीज लोगों का जर्सी देखो यार क्या करके आया भगवान जाने कुछ खाने का तपेला वपेला गिरा दिया और टी शर्ट पे ऐसा लग रहा है किसका जर्सी. जापान का यार इस अच्छा तुम का बैडमिंटन jerseys have नाराओका का always देख been रहे हो. super designer abstract art no one can make any sense out of them there needs to be some makeover for badminton jerseys हम्म. anyway Sindhu should peak during Olympics और क्या ही चाहिए एग्जैक्टली Sindhu यार. मतलब हम yeah, प्रीवियस स्ट्रीम में वी एक्चुअली डिस्कस्ड हाउ सिंधु शुड गो अहेड. लाइक फर्स्ट शी शुड रिकवर, देन शी शुड फाइंड द रिदम, उसके बाद शी शुड पीक. आई मीन इट्स अब 3-4 महीना तो उनको रिकवर अच्छे से रिकवर होने में लगेगा, धीरे धीरे रिदम. एंड आई मीन द ओनली एम शी शुड बी होल्डिंग इज टू पीक एट द राइट टाइम. दैट्स इट. आप उसके बाद कुछ भी उसके पहले पीक नहीं करना है. बस ओलंपिक्स के and पहले पीक नहीं करना है. that has been Sindhu's style so Sindhu has always peaked at the right time and that's what हाँ, matters no one will दैट्स व्हाट. remember if you won the German Open or Vietnam Open नो वन. क्रिकेट का इक्विवेलेंट हो गया ना पेटीएम सीरीज जीत रहे हो और फिर जाके वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पा रहे हो यार
Srikanth losing points on the trot there. He's trying to just frustration. He's like shouting in frustration right now. So Shrikant. yeah, I mean, it looks very tough for him to recover from this point. That 7-2 is already यहाँ से नहीं considered. निकल रहा है. I mean, even though he can like recover just like he did in the very first game, but यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है उसके लिए. Like a 5 point And the good lead. thing is we won't have Axelsen winning this tournament. At Good for least the not sport. excellent. Yeah, very good for the sport. Very good सभी for को the जीत sport. रहा है ना Yes. बंदा. हाँ. ये ऐसा ऐसा ना ऐसा डोमिनेंस ऐसे भी नहीं होना चाहिए किसी भी गेम में बट ऑब्वियसली यार इट्स गुड फॉर हिम ही इज बीन प्लेइंग वर्किंग हार्ड बट नॉट हेल्दी फॉर स्पोर्ट अब ये डोमिनेंस नहीं होना चाहिए कभी भी कि एक बंदा चल रहा है लंबे टाइम तक अनडिफीटेबल Usain Bolt. look at that Usain Bolt very good example श्रीकांत ने क्या जंप लगाया वहां पे एकदम जबरदस्त. just look at him he has to try so hard to get a single point so hard हाँ मतलब अगर रिटर्न होता ना क्रॉस कोर्ट he would have given a clean play because वॉकओवर this is वॉकओवर दे देता वॉकओवर Srikanth is throwing everything at him. Like I know the kind of effort you require to hit a jump smash. और after hitting a jump smash अगर ऐसा रिटर्न आए तो फिर कोई नहीं ले पाएगा. हाँ ये बहुत गंदा एरर कर रहा है रे पॉइंट लेके. It's completely out of sorts. इतना रिकवर करना ही मुश्किल है सिंगल्स में लीड. भैया हमारे एचएसपी निकाल दे रहे हैं सेकंड गेम अरे यहाँ यार पे मेरे को है ना ऐसा मुंह से गालियां निकलेगा बिकॉज द काय को तुम ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डाल रहे चैट में. अदर देन थॉमस कप आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज श्रीकांत ब्रिलियंट. So I have some things for you. In 2017 season, then in 2016 Rio Olympics, then World Championship when he won the silver medal. These are very few times when Srikanth was brilliant. He has been brilliant for most of his career. Please do not demolish any person's career like this. Yeah, The fact that he Thomas has Cup, reached I think it was HSP who became the master of, who became the jack of all trades. इतना मुझे समझ में आया. I mean, Srikanth was there, everyone was there, but it was yeah. HSP who played a very good part. हाँ तो वो मेंशन करो ना लास्ट 2-3 इयर्स तो भी वो काफी अच्छा ही किया है. लाइक किदाम्बी श्रीकांत हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट इंडियन बैडमिंटन मेन सिंगल्स प्लेयर because he has a world championship medal. He was the world number 1. He has played at the Olympics, lost to none other than Lin Dan. अभी अभी थोड़ा कमबैक करने का ट्राई कर रहे हैं. ऐसा ऐसा तो 2014 पे वगैरह कमबैक करने का ट्राई नहीं करना चाहिए. दिल से बुरा लगता है फिर. Yeah, 2 point के लिए HSP I don't know what he's doing. Oh, he's moving the shuttle around nicely, Srikanth. But some great returns by Kodai Naraoka as well. Net पे Srikanth has been dribbling well, but क्या हो रहा है कि the Japanese seems to be everywhere. Like Srikanth is literally trying each and every shot that he has. But क्या रैली करवाया है, पूरा का पूरा रैली करवाया है. सामने वाले का फटके 4 हो गया यहाँ पे. बहुत बहुत अच्छा रैली करवाया. Actually, Kodai needs someone like that. क्योंकि वो उसके I mean, Srikanth is बहुत trying जाता है. to make like do something different here, and that is absolutely working. And 9-6 is still like 9-6 is fine. 3 point difference is fine. He'll recover. उसका मुझे भरोसा है. पर वो फिनिश नहीं कर पाएगा वो भी मुझे भरोसा है. Because even in the first game he showed a lot of effort. रिकवर किया है बट फिनिश नहीं कर पाता है. यहाँ 1 point के लिए यार जल्दी खत्म करो. तीसरे गेम में जाएंगे. Samir and Saurabh completely out of these. समीर बहुत टाइम बाद दोनों नाम सुनाई दिया मेरे को. मैं तो एक साल पहली बार Now people will bring up the name of Sai Pranith as well. But again, Sai Pranith, former World Championship medalist, and like क्या बताए अभी वो मेरे को अभी तक थोड़ा ट्रॉमा होता है वो ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस देख के. It suddenly disappeared after that. So. फिर तो वो रहेगा. Okay.
So श्रीकांत क्या was हुआ? consistently going for that net shots और वो हाँ. श्रीकांत वापिस वही कर रहा था and Naraoka adapted very well. He went for a cross court dribble. श्रीकांत का एरर हुआ थोड़ा सा and then मुंह पे टैप खाया. तो अभी उसको भी समझ गया कि श्रीकांत अभी सिर्फ ड्रिबल ही करने वाला, अभी वापस कुछ तो नया, मोर लाइक चेस नाउ. वाओ, मिक्सिंग इट अप रियली वेल, वेरी. तो यार मुझे लगता है यहाँ से HSP will be able to take out the match now. Actually able to take out. ये जाना ही नहीं चाहिए था तीसरे गेम तक यार, ये फालतू का लीड छोड़ दिया ना बीच में. स्ट्रेट गेम का सेट था, स्ट्रेट सेट्स. यार मेरे को तो यहाँ पे देख के मजा आ रहा है, खेलने का ही मन कर रहा है. लाइक दिस प्लेयर्स, इवन श्रीकांत इज पुटिंग अप अ फाइट. नाराओका इज रिटर्निंग एवरीथिंग बट श्रीकांत इज पुटिंग अप एन एक्चुअल फाइट. अभी भी 3 टैप करके पॉइंट मिला है. द जापानीज इज गोइंग फॉर ईच एंड एवरी शटल, लाइक ही इज थ्रोइंग हिमसेल्फ हियर एंड देयर. यार मुझे भी देखना है यार HSP का जल्दी खत्म हो. मैं नहीं तो मैं भी बैठ के वही स्ट्रीम देखने लग जाऊंगी. How was Prannoy's first set, like 20 to 20 यार score? ये बेसिकली ही डोमिनेटेड थ्रू आउट द गेम. ठीक है, फर्स्ट And गेम then और he lost. आखिरी में जाके आखिरी के 2 पॉइंट मेड वाज 2018 और आखिरी में जाके उस बंदे ने कर दिया बराबर काम. Mark my words, Neeraj Chopra again going to win Olympic gold. Like, no Neeraj one will be Chopra more entering happy. conversation of other sports streams. क्या 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 क्या? नीरज चोपड़ा हर बार बाकी स्पोर्ट्स के स्ट्रीम्स में आ जाते हैं करके. आता ही है यार, नीरज चोपड़ा इज द कांस्टेंट. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही प्लेड. उसका सीजन स्टार्ट होगा अभी. हम्म. भाई श्रीकांत इज गिविंग एवरीथिंग. ही रियली वांट्स टू ट्राई एंड विन दिस सेट. ही इज गोइंग फॉर ईच एंड एवरी शॉट, ड्राइव कर रहा है बट नाराओका इज जस्ट सिंपली टू गुड. ऐसा लगता है नाराओका पर्सनली इंडिया के मैचेस तो मतलब इंडिया के प्लेयर्स को तो अलग से स्टडी करके आता है, स्पेशली इंडिया के प्लेयर्स को. Age is on his side. No, 21 एज इज year ऑन old, हिज साइड. 30-year old is makes a difference. जेस्विन इज माय पेरिस 2024 गाय. यार मालूम जेस्विन तो मेरा भी 2024 गाय है. आई जस्ट वांट हिम टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जेस्विन के लिए. मैं तो पहले ही बोलता था भाई पटियाला मैजिक छोड़ो. I actually am very interested to see Jaswin perform in the Olympics now. We देखते हैं we क्या need करता है. we need 5 more jumps by Jaswin which are over 8.35 in order to make him a contender Yes, for Paris. yes, 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 absolutely. People are saying Consistency. that he jumped more than Tentoglu, but the Greek had more consistent jumps over the last 2 years. So it's easy to Consistency. compare stats, but we know of a certain 22.22 meter shot putter. So. India has a certain mental block against Japanese and Chinese at the highest level. कुछ भी यार, कुछ भी नहीं बोलो No. यार. हर बार ये मेंटल ब्लॉक वाले लोग आ जाते हैं. When we win, they are again like. We absolutely do not have. If you ask me, Victor Excelsen के against हाँ होगा, ठीक है. I understand. But East Asia के against या Chinese के against we do not have a mental block. वो सब नहीं है हमारा. कभी अरे दिखा भी नहीं है यार, वो. श्रीकांत बहुत गंदा एरर कर दिया टैप पे. यार उसका पॉइंट निकालने में कितना मुश्किल हो रहा है श्रीकांत को. आंख आंख में से खून आ रहा है अभी. वो बहुत क्या आउट ऑफ सिलेबस कमेंट आया. पहली बार हमारे स्ट्रीम पे रग्बी का कमेंट आया. You know, my state Bihar has such amazing rugby players. Oh, nice. कर सकते हैं. रग्बी भी होता बिहार है ऐसे ओलंपिक. बिहार में है टैलेंट, बाहर उभर के नहीं आ पाता है बस. Once Srikanth play was like an art. So much rhythm, so much quality shots, so much smoothness, drops, smashes. Yeah, he used to do everything. Yeah. I've seen Srikanth. वो एरा मुझे तो बहुत अच्छे से याद है 2015. आज भी अच्छा ही खेल रहा है. मतलब ही इज डूइंग रियली वेल. मतलब He's इतना not able बढ़िया. to crack it. वो होता है ना कि आप क्रैक कर देते हो ना किसी चीज को, वो क्रैक नहीं कर पा रहा है. बट दिस इज नॉट Trying श्रीकांत. everything. He's old man. Come on.
तो ठीक He's giving है. everything. He'll now literally give everything in that rally and still lost it. So we just have to. It's not like Srikanth is losing this match. It is Kodai Naraoka winning it. Winning That's it. the only हाँ. difference. That's Either the you way to lose a do it. match or the opponent wins it. So there is a huge difference. Srikanth is not losing his match. His opponent is simply winning it. चलो यहाँ पे एक एरर करा है गिंटिंग ने फाइनली. HSP has been very aggressive throughout the match, so that's good. Finally has a lead 4-3. यार कुछ गिंटिंग भी इज इन रिटर्न प्रेशर यार, उसने सर्व एरर कर दिया. या मुझे भी श्रीकांत का मैच देखना. नहीं कुछ भी रिटर्न कर रहा है यार ओपोनेंट उसका. He's flying. Okay, Kodai लोग बोल रहे Naraoka हैं इफ देयर flies. इज अ विनर देयर इज ऑलवेज अ लूजर. अरे भाई तुम मैं क्या बोल रहा है तुमको समझ रहा है क्या? रात को 11:30 बजे लॉजिक आर्ग्यू कर रहे हैं. जॉली Soul पुले. hope. अरे I'm गाइस एचएस प्रणॉय ऑल इंग्लैंड टाइटल लोडिंग. ओके मैं अभी क्या बोलूं यार. ही इज ऑन 4 ऑल नाउ. शिट. all. Errors करे यार. Obviously, Ginting is not going to give up that easily, but he's making errors. Ginting is in pressure. एंड Serve error कर दिया लड़के ने. if you're saying that he gifted the first set to Ginting, then it's obviously going to be difficult He for. did. He did. बात बस इतनी सी. He was not able to finish it well. ट्रॉफी में दिया है मैच. HSP has no big title. हाँ यार, एक तो ये इसका है इस आदमी का. इतना खेलने के बाद भी है able to win everything. Shreya is a huge fan of this Manipur video. So Shreya, Manipur video was covered by one of our best journalists, Dipankar. तो वो और इसीलिए उसको वो प्रीति स्टोरी ऐसे कन्वर्ट हो. yes मतलब guys ऐसा please. नहीं है कि प्रीतिश को नहीं दे सकते, पर वो किसी और ने कवर किया था. तो वो आप thebridge.in पे जाइए और दीपांकर लहरी नाम से आर्टिकल्स पढ़िए. हाँ, ही इज वो माय पढ़ो फेवरेट आप. जर्नलिस्ट. सो आप प्लीज वन ऑफ द जरूर. फाइनेस्ट वी हैव. पढ़ो, मजा आएगा. क्या जंप स्मैश मारा है श्रीकांत. एकदम ऐसा मॉन्स्टर. यार वो प्रीति मैच के बारे में सुन के तो ना मुझे मेरे को मैच बहुत बोरिंग लग रहा है ये. Guys, Pritish is at the boxing world championships right now. Not right हाँ. now, कल सुबह जाएगा ऑफिस, but he's at the boxing world championship. So इतना एक्साइटमेंट है कि वापस ही नहीं आया. मैं खाली स्टेडियम. वही. So he is covering all the tweets that you're seeing regarding our boxing, regarding the boxing world championship. That Pritish is doing that. Yes. I think we क्या can have net another Oh, double Srikanth shot. is pulled back 4 points here. Okay. यार Naraoka is पर वो making नहीं errors निकाल right now, but it's नाराओका too तो little यार too late, I guess. वेरी लेट. हाँ, it's late. The thing is, no, both players are playing so well that प्रीतिश मैच ब्लॉक कर रहा है. प्रीतिश यहाँ से कमेंट उठा के डाल दे. प्लीज. यस. काश कोडाई श्रीकांत की तरह 5-6 एरर करता और कोडाई फ्रस्ट्रेट हो जाए. यार 5-6 नहीं एरर वो कर देगा उसने ना एरर तो किया है. अभी फ्रस्ट्रेट होना ही बाकी है बस. प्रकाश पादुकोण का मैच देखा किसी ने? ओह माय गॉड. इज दिस सम लाइक द क्रिकेट लेजेंड मैच होता है वैसे बैडमिंटन लेजेंड्स का मैच चल रहा है. हाँ यार. गिंटिंग लीड हो सॉरी, गया जस्ट नोटिस लीड ले लिया यार 2 पॉइंट का उससे. भाई. So Srikanth and Naraoka are playing really good, but Naraoka again restores his 4 point lead there after a long rally. He's literally receiving each and every shot. श्रीकांत तो वहां पे फ्लिक भी ट्राई किया. स्मैश. श्रीकांत इज विजिबली टायर्ड जितना राइट आता है, नाउ. जितना सीखा है बैडमिंटन सब लगा दिया उस बंदे ने आज. वो गिर गया नाराओका, but he won the point because Srikanth made an error. The Japanese is not going to be able to play his next match. He won't.
यार यहाँ और पे तो यार यार गिंटिंग इज oh डूइंग shit, वेरी गुड। potential winner HS Prannoy losing. What the hell? 10-7, हाँ यार वो गिंटिंग हैज बीन प्लेइंग सम ग्रेट ग्रेट शॉट्स नाउ, ग्रेट शॉट्स। पकड़ लिया है इसने प्रणॉय को यार, स्ट्रेट पॉइंट्स निकाल लिए हैं इसने यहाँ पे। 54 शॉट्स का रैली था प्रीवियस वाला इन सेकंड सेट एट द latter part of second set. साइड में डैडीज खेल रहे हैं यार। हेंद्रा शेतेवन कितना बूढ़ा दिख रहा है यार। he's been there for यार वो बूढ़ा 18 है, वो 19 years right now, बूढ़ा 20 है years. वो। 2008 Olympic gold medalist. Naraoka was like 7 years old during that time. देख लो। HSP is a giant killer. He has a reputation of beating all legendary players and losing out on lower ranked players. Hey, Ginting is not a lower ranked player. He plays good, very good. अरे रीनिंग ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। मतलब भाव ही नहीं देते यार जिंटिंग को, तो ऐसे लेते हैं ना लोग बिल्कुल। तो इतना खेलने के बाद भी बंदे की इज्जत नहीं है। But the thing I like is Chen Long was under the radar most of his career. In 2012, the guy won a bronze. In 2016, he won a silver. गोल्ड 2016 ही वाला गोल्ड, नो? He won a gold, and this time he won a silver in ही वाला 2021. सिल्वर, यस। Under the radar, he won all the medals that are on offer at the Olympic Games. And लेजेंड against बन Kevin के चला गया Corner, वो। अरे अगेंस्ट केविन कॉर्नर भाई क्या, दैट्स आल्सो ट्रू। वो ग्वाटेमाला का एक प्लेयर फोर्थ आया था ना ओलंपिक्स ओ में। ओ हो गिल्टिंग ने गॉड, उससे हराया हाँ। था ब्रॉन्ज मेडल मैच। ओके ठीक है यार, आई टेक माय वर्ड बैक। कोर्ट्स ओनली ने ऐसा सार्केज्म डाला है ना अभी, आई कमेंट वाज सेक्शन आई में टेक माय वर्ड भर भर के बैक। सार्केज्म। लामा मेडल, ओ माय गॉड। ये इंडोनेशियंस को टैग करके ट्वीट करो गाइस प्लीज। भैया वो हल्ला लोग हो आ जाएगा। जाते हैं, सेमंग टक करते आ जाते हैं ये लोग चैट में। आज तो आए नहीं बहुत दिन से। और श्रीकांत इज लिटरली डाइविंग हियर एंड देयर, ही अगेन ट्राइड टू नैरो द लीड। यार मुझे भी 14 श्रीकांत का आया। मैच देखना है। और अभी नहीं देखो ठीक ऐसा है। ही 11-9 कर लिया है, यहाँ से पता नहीं कैसे निकालेगा वो मैच। आई हैव नो आइडिया। Srikanth gave that 3 point lead early on. I mean, Setyawan is really looking like an old man यार, पीछे दिख रहा है। यार ही इज एन ओल्ड मैन, Man. कम और ऑन। the way he is standing and all. सेम टप। His partner died, you know. हाँ 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 Marcus हाँ। Kido passed away. So Setyawan is 38 right now. Marcus Kido passed away in 2021. Yeah, 14 June 2021, just before the Olympics. Very sad. ये HSP निकाल लो, एक दिन में 4-4 हार नहीं झेलाएंगे उनसे। यार ही सो गुड यार, एक रैली पहले पॉइंट पे ऐसा रैली चला रही। बहुत ही प्यारा शॉट यार, ऐसा ऐसा घुमा के मारा है बिल्कुल गिंटिंग ने, क्या बताएं। Thank you for sharing नारियल पानी वीडियो। आज से I started drinking it से श्रेया। Oh my god, वो वाला। I just love how enthusiastically she talks about the videos that we did. She talks about everything on the channel so enthusiastically. We need 1 crore more people like her. Project 1 crore. Guys, we are very close to 100K. Please subscribe. Okay. अरे नींद उड़ा दी मेरी। Anthony Gonzalez. Anthony Gonzalez winning. Oh my god. Okay, Srikanth benefits from an error. 15-17. He's there on the fringes trying to make a comeback and equal the score, but he's not been able to do that. HSP का जिंक्स ये टूर्नामेंट में ब्रेक हो रहा है, काफी कठिन लग रहा है हमें तो। फिलहाल 3 पॉइंट की लीड है यहाँ पे जिंटिंग के पास, एंड ही प्लेइंग गुड। ओके, यहाँ पे 1 पॉइंट एरर कर दिया यहाँ पे। 2 point lead here also, 2 point lead here also. तो दोनों इंडिया के साथ में नहीं है। HSP अब वो पॉइंट भी इसलिए कुछ जस्ट इतना सा रह गया उन्हें, तो था ही नहीं पॉइंट। विति सच में वो साइड वाला एंगल काफी हानिकारक है हेल्थ के लिए।
especially when they are dribbling at the net. Srikanth is giving a bit of flight, trying something new. Arre, he literally messed up with Naraoka there. Srikanth controlled the entire rally. ठीक है, उसने हाँ उसको टॉप को ड्रॉप कॉम्बिनेशन करके रॉन्ग फुट किया, and at the हाँ last moment he did an error by hitting the smash outside, because he has to hit the shots with so much precision कि उसका अगर थोड़ा भी अंदर जाएगा तो उसका एडवांटेज चला जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले की सीन की वजह से लाइक श्रीकांत इज लेजिट गिविंग एवरीथिंग टुडे, एंड रिस्पेक्ट टू हिम फॉर दैट. आज अगर कोई बोला ना श्रीकांत बढ़िया नहीं खेलता भाई, देखो तुमसे मत आना ये अगले टाइम से. श्रीकांत ऑलवेज गिव्स अ गुड फाइट. एक मैच नो मैंने नो, देखा था, आई डोंट दैट्स रिमेम्बर नॉट ट्रू, एग्जैक्टली द दैट्स मैच, नॉट ट्रू. बट एक मैच देखा था मैंने. इट इज एक मिनट, लोग एक मैच था, इट वाज अगेन लक्ष्य सेन. जब लो लो आई थिंक उस टाइम पे चैंपियनशिप जीता था, तब की बात है यार. पर हाँ मतलब समटाइम्स ही जस्ट प्लेज ही लाइक एक वॉकओवर ही दे ड्रीम दो इससे अच्छा तो. ड्रीम फाइनल नहीं होने वाला श्रीकांत वर्सेस प्रणय. सॉरी No, गाइस. it's not. बात यह है कि शायद एक भी इंडियन फाइनल तक ना पहुंचे, ये भी एक. Oh, nice stat. Last year, men's singles finalists out of tournament. Victor Axelsen and Lakshya Sen both losing in round of 16. या देखो इस बार ये Srikanth gave his everything. Naraoka winning this straight sets. ओ भाई, ये कैसे निकल गए? ये 3 पॉइंट निकाल लिए यहाँ से स्ट्रेट. आग बंद करिए, खोली, खत्म. और डब्ल्यू डी भी जीतेंगे यार. एक दिन में 4 मैच हार रहे हैं यार अभी. ओके, इट्स नॉट डन येट, नॉट येट. प्रणॉय इज एक्चुअली स्लाइडिंग बैक थोड़ा सा. Why राइट. is Srikanth taking a challenge at 2015? Oh, it's done. ये 21-15. यार खत्म. It's done. It's done. Srikanth is out of the tournament, guys. खुशी से बता रहा है. Srikanth is हाँ, out. रात में मैं कहा खुशी 11:30 से बजे. मेरे को इतना अच्छा खेला है वो कि मैं दुख हो रहा है मेरे को. वो कभी मैच इसका था ही नो. फाइनली एचएसपी ने ऑल कर दिया भैया. Oh, nice. I'll shift फाइनली. now. I'll shift to HS Prannoy's match. Guys, रुको, जिंटिंग सबर करो. काफी एरर कर रहा है अब यहाँ पे. ऐसे मत करो तुम. एक गिंटिंग एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसको देख के लगता है कि एरर कर सकता है. मतलब जिसका हाइप बना हुआ है और ऐसा लगता है एरर कर सकता है. बाकी तो अजीब बंदा है यार, ये सब इंडोनेशियन हाइप है. क्रिस्टी, गिंटिंग, both हाँ are like हाँ. good players, but at the top level kind of mediocre as you if you compare them with the other top players. So एग्जैक्टली. हाइप है, like हाइप. all the Indonesian hype, Semang Tap, Semang क्या वो. चलो भैया निकालते हैं यहाँ से यार. Because पर she's आप ये saying देखो कि इन दोनों की जुगलबंदी ऐसी है ना एचएसपी से. लगता है कि एचएसपी और गिंटिंग का ना गेम ऐसा है कि वो रग रग से वाकिफ है एक दूसरे के. खेल इतनी बार दिए हैं वो. oh damn 15-14. ओके. Hello Pritish bhai. हाय. How are you Pritish? आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो गाइस, कैन यू गाइस हियर मी? यस यस यस. आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है, आ रही है. Guys, Pritish अभी चैट से व्हाट्सअप. स्ट्रीम पे आ गए हैं. क्या यार क्या किया शॉट. ये श्रीकांत ने? सो अच्छा खेला है, मैं मना नहीं करूंगी बिकॉज अभिनवन ने पूरा कमेंटरी दिया था. बट ही नेवर हैड नो एनी आई चांस टू आई हैड अ कुक्ड अप डे 6 आवर्स 7 आवर्स एट द स्टेडियम एंड फिर मैं चैट पढ़ रहा हूँ एंड आई वाज लाइक कि क्या चल रहा है यहाँ पे. सो ऐसे अब थोड़ा ज्वाइन करते हैं. बट नमन वाज राइट, श्रीकांत गेव एवरीथिंग. बट सो आई थिंक दैट कोडे का ना वो उसका वो लाइक दैट्स हिज टेम्पलेट. मलेशिया ओपन में इतना इतना जबरदस्त खेला एक्सेल्सन के अगेंस्ट, हार गया. इंडिया ओपन में आके 21-7 21-5 ऐसे करके हार के गया फर्स्ट राउंड में बिकॉज ही हैड नो एनर्जी लेफ्ट. Oh but Ginting running away man. What the hell? हम तो शाम को बात कर रहे थे प्रीतिश की फाइनल होगा प्रणय श्रीकांत का. अरे अब तो मुश्किल लग रहा है. अब तो सब मुश्किल लग रहा है. सबके देखना, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है. हमारे सपने तो सच्ची ने तोड़ दिए हैं अच्छे से. ऐसे ऐसे करके फेंक दिया लोगों ने हमें. So Pranay needs to pull off a miracle here. अयो very bad error था. चलो ठीक है. बट बाय गाइस.
बाय थोड़ा सा विथी, वैसा तुम देख कल लो ट्रीसा गायत्री वाले मैच को मिलेंगे. या भी चल रहा Streams decline in day by day. Dude, what a day, dude. But मतलब लक्ष्य का गेम तो Antonsen was insane today. हाँ मतलब मैं तो देखा नहीं मैच, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं. नहीं विथी एंड रीचा और doing that. Antonsen was joking today with Lakshya. That's it. नीतीश, आपको किसी ने तो देखा था केडी जादव स्टेडियम में. अच्छा ऐसा क्या? हाँ, KD Yadav मिलो was का insane today though. Oh, you saw me today. Wow. So कल मिलते हैं. If you saw me today, let's meet tomorrow because tomorrow भी I'll be there. So almost done. Prannoy almost losing here. So kind of he's frustrated as well, and Yeah, but you know, Naman Ginting has this thing. He has this insane ability to play long matches. बहुत हाँ खेलता 3 है और सेट मतलब वाला है. 3 setters में he is like especially in the third set he's absolutely like brilliant. कितना स्पीड से खेल रहा है. Like he has that immense speed for a guy who is playing his third set right now. So And the game has already gone like 65 minutes हो चुके हैं मैच में अभी तक. And he's हाँ, still and he's playing with playing it. really smooth. काफी अच्छा लग रहा है देख के. That is what you need. अरे ये तो फिर हॉकी साथ कंपेयर कर सकते हैं, but let's not go into hockey right now. So Yeah, हॉकी में भी अच्छा even किया if it जुवानी did ने. well, I am a bit disappointed कि हमने bye keep supporting us श्रेया. You are our best supporter till now. Good night. सो जाओ, सुबह जल्दी उठो. हम तो उठेंगे भैंस जैसे 11 बजे. तो यार हाँ, so I was saying कि yeah, hockey में we were giving like letting the opponent score at the end. तो वो तो हमें avoid करना ही पड़ेगा बाद में. By the way, it's almost over for Prannoy. Yeah, तो it needs a miracle 5 point cover करना. But आज you know when people were talking about Pranay and all तो मतलब I went back थोड़ा सा पीछे 2018 में एशियन चैंपियनशिप जब प्रणॉय ने 11 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए. 2018 Nice. एशियन चैंपियनशिप and that tournament was like insane. प्रणॉय ने उसमें सारे 3 सेटर खेले. वर्ल्ड नंबर 2 को खेला था, चेन लॉन्ग को खेला था. चेन लॉन्ग से हार गया था सेमीज में. But like that tournament was one of the peak Prannoy tournaments. Like he was too good. नहीं, the thing is ना देखिए, each and every Indian singles player, the trend has been not just now since a lot of years that they have done well in certain tournaments. They have had their moments in patches, but no one has been able to stick to that tag of one of the world's best for some 12 months or 14 months at the same time. Srikanth came the closest, but then lost to Linden in Olympics. Kidambi had that freak injury didn't happen to him, but because that injury was very bad. Let's agree to that. वो injury बहुत ही गंदी थी. Like it took him ages to recover from that injury. So had that injury not happened at that point of time, तो Kidambi would have done pretty well. चलो खत्म हो गया तो. 21-17. Chalo guys, so 5 matches played by India today. We have lost 4 of them, winning 1. The only one match we have won is by Gayatri Gopichand and Teresa Jolly, the least expected among the 5. But at the same time, it is very convincing. But this is where they made a mark last year. This is where they reached till semi-final. So it's kind of homecoming for them. And I'm definitely, I mean, Abhi, I think Satvik Chirag I was expecting because obviously both of them, like Satvik is coming from an injury. Yeah. And they didn't expect up against a very informed opponent, and still they went to a third set. I saw Liang and what's the other guy? Liang and Wang in India. Oh my God, they are in just too good of a form. They are too brilliant at the moment. उन्होंने I think they beat Daddies या Minions में से किसी को हराया था इंडिया ओपन में, and it was an insane game, one of the best doubles bout I have seen. आपका बॉक्सिंग अभी तक दिमाग में है, आपने बाउट बोला है.
अरे सॉरी, अरे अरे अरे, हाँ यार, एंड द थिंग इज कि टुडे टू ऑफ द इंडियंस वॉन उस तरीके से, लाइक रेफरी को कॉन्टेस्ट रोकना पड़ गया. निखत जरीन वाज तो निखत Oh, जरीन so गॉट वेट. Nikat won by वो referee आरएससी, stops. या RS. आरएससी. Oh my God! And who was the other person? Did Neetu play today? No, Neetu. So there was 4 matches today. So it was Nikhat. There was Sakshi. Sakshi won. Nupur won. And there is Okay. this 19-year-old kid from Bhiwani, Preeti. उसका किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था. उसने भी सेकेंड राउंड में रेफरी से रुकवा दिया मैच. So good games, but Nice. वही है कि the boycott has taken a toll on the tournament because the major countries are not there. But still, है Like काफी which are कुछ the है. best countries right now? हाँ. सबसे अच्छे countries कौन है अभी in the women's boxing world championship? Russia is there. Colombia के boxers हैं. And the missing one, the main missing is Great Britain and USA. Yeah. Great Britain. Yeah, Great Britain. I still remember Mary Kom losing to Nicole Adams in 2012 in the semi-finals. So the thing about Great Britain is कि Great Britain puts a lot of effort into making boxers. And वो लोग not just, and of course they don't have politics that we have here as far as boxing or wrestling is concerned. And वहाँ पे वो जो high performance में जाता है, even you see at a Tyson Fury fighting, वो ऐसा ढेरी लेके he's become such a great boxer. So in Britain, boxing is kind of culture. The hooliganism of English football fans has transferred into boxing somewhere down the line. And Britain missing out is a huge blow. And as you mentioned, USA. So मतलब The top thing is, मतलब कोई top seeds वगैरह है top rank boxers? नहीं है, बहुत सारे अल्जेरिया के हैं. Like there are people from France also. Like there's an interesting boxer Estelle Mosley making a comeback after 7 years. So उसने 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती. उसने 2016 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता. Then she turned pro. और अभी वो वापस से एमेच्योर बॉक्सिंग में आई है ऐसा. So it's a very interesting. Oh, so I'm checking boxing. So men's, of course, I know कि only Cuba dominates in men. But I'm just trying to look at the results in women. So do we have any Olympic medalists playing? Yeah, we have a lot of Chinese boxers are there. As I mentioned, France की है Estelle Mosley, and I think former Turkey की Olympic champion है. Oh, has she come the person who defeated Lavlina Borgohen in semi-finals? Turkey की थी वो 7 middleweight में she went on to win the gold. Very dominating person. So the thing is, Lavlina has changed her weight category. So ये सब बहुत हुआ. I know, but is that boxer there? Yeah, that boxer is there. Oh, nice. Is there? उसका draw I think कल या परसों something like that. Boxing World Cup में controversy में आप किसकी साइड हो? I mean, see, this is a very weird thing to say. As you mentioned, right, आर्यन, कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मैं इंडिया की साइड हूँ, तो फिर इंडिया को कोसोवो को भी बैन नहीं करना चाहिए. So it's like it's a very dangerous place to be, honestly. And the IBA का president is Russian and he was here. And when everybody asked him, जब like press conference में people asked him that what do you think about it, तो he said कि हम IOC को नहीं जाके बोलते हैं कि तुम ओलंपिक्स कैसे कराओगे, तो IOC हमको क्यों आ रहा है बोलने कि तुम बॉक्सिंग कैसे कराओगे. And I was like, what? But मेरा तो contention बात यही है कि there's a reason why boxing is under the radar. आपने अगर controversial decisions देना बंद नहीं करोगे तो definitely they'll also stop badgering you. So you should start a decent point system. You have technology all around the world. Even football has accepted VR. So why not boxing to start? See, judges and referees in football, referees in boxing are a sham. Okay, like whatever bouts I've seen, and it's always India at the other side of the controversy, and we are the ones who lose out. And that, so in 2012, I don't remember, was it Vikas? It was Vikas Krishnan, I guess. Vikas Krishnan. A lot of times. Vijender turned pro for the same reason. USA appealed against him, and then, they won the bout. मतलब क्या कर रहे हो आप? Like, if it comes to decisions, Lashram Sarita Devi, the biggest name in Indian boxing. Yeah, that which will lost because of career. Yeah, very bad. मतलब वो तो काफी ज्यादा उनके कंट्रोवर्सी में पूरा करियर चला गया ये सब. And she even refused to accept the medal. So
कोई तो मैसेज कर रहा है in the chat, there is no transparency in boxing. Yeah, that's the reason why boxing is so ambiguous. So if you This start time making they are using a DRS actually. Naman, this time they are using a DRS. So basically oh there is a review system which they haven't disclosed what it is. And आज पहले दिन पे कोई contentious decision हुआ नहीं. एक था जो वो sports only is mentioning कि Russia versus Australia match was little bit of weird, but nothing happened उसके बाद भी. So I'm very excited to see कि क्या DRS use कर रहे हैं लोग. I think is, see, of course, boxing as a game has been always to do with how players play, and it can be different. So you cannot make a set rule of set guidelines कि किसको कितना point मिले. But like other sports, okay. So people are talking what about badminton. Small summary: India played 5 matches today, 2 doubles, 3 singles. We won the women's doubles. We lost the men's doubles. We lost all 3 singles. So Lakshya Sen, HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Chirag Shetty, Satvik Siraj, and Ranki Reddy all are out of the tournament, and we only have Gayatri Gopichan, Trisa Jolly playing, and they'll be competing in the quarterfinals tomorrow. So that's the status of badminton. But now we are talking about boxing. I personally wanted to catch up with boxing, and so we have a decent 80 people watching. So we thought, why not? Oh, it's become 67. Anyways, we had 80 people watching about boxing, so we thought of continuing with the same. So Pritish bolo yaar. Yeah. हाँ तो भाई आई मीन बॉक्सिंग देयर सो एंड द थिंग इज कि एक होता है ना स्पोर्ट्स इवॉल्व होता है सो बॉक्सिंग हैज गॉन डाउन बिकॉज विजेंद्र सिंह और लेट्स से 2007-8 में जब जितेंद्र सिंह अखिल कुमार वेर प्लेइंग इन बीजिंग उस टाइम का सिस्टम कुछ और था इफ यू हिट अ पंच देयर विल बी अ कलर देयर इज अ बोर्ड वेयर यू विल गेट टू सी लाइक किस बॉक्सर को वो पॉइंट मिला है दे चेंज इट टू रेफरी वो जजेस वाला सिस्टम एंड नाउ इट्स ऑल पर्सनल लाइक दिस इज द सेम थिंग कि स्कूल में अगर आपके एग्जामिनर का मूड खराब है तो गंदे मार्क्स दे सकता है आपको सो इट्स द सेम थिंग यू नेवर नो ह्यूमन कहाँ से आ रहा है क्या उसको वो किस स्पेस में है वो इफ यू लेट्स से इफ वन ऑफ द जजेस इज इन बैड मूड एंड ही जस्ट गिव्स अ रॉन्ग डिसीजन व्हाट विल यू And another thing, what I feel here is what you mentioned. That makes complete sense in modern day because यार ये विघ्नेश कंटिन्यूस कमेंट कर रहा है डोंट फॉरगेट देवेंद्र सिंह 2012 he dominated the round in quarters but lost the match. I mean that's the story of Indian boxing till now, and I always get disappointed while watching because most of the even in Commonwealth games in live streams also I was frustrated कि वो क्या हो रहा है करके. A couple of matches there was this random Ghana pugilist or some African pugilist against an Indian boxer, and that was a very contentious decision. There was this Irish boxer Ashish ke against, which was insane. They both went head and Ashish lost the match. Yeah. So coming back to what I was talking about, ki in boxing now with so much technology, the system you're mentioning in 2007, 2008, ki if you land a punch straight on the opponent's face, then it can be given 5 points, let's say, just giving up some points to it. Then upper body, of course, you can nominate that these parts count for these points. और अगर ये points are tallying, कुछ तो टैली हो रहा है, बट फिर प्रॉब्लम ये होता है ना कि समटाइम्स अ बॉक्सर इज गुड डिफेंसिवली, इज लैंडिंग द राइट पंचेस, कि एक पंच होता है जो आपका इधर ऐसा ग्रेस करके जा रहा है एंड द अदर पंचेस विच इज हिटिंग यू राइट हियर. मतलब इम्पैक्ट बॉक्सिंग में इम्पैक्ट भी काफी देखते हैं ना, तो वो थोड़ा मतलब लफड़ेगा. इसलिए प्रो बॉक्सिंग बेस्ट है. 12 राउंड खेलो, 15 राउंड मस्त आप धबेड़ते जाओ सामने वाले को जब तक नॉकआउट हो जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट, इवन व्हेन इट्स अ डिसीजन, like it's quite clear whom the decision is going with. Wrestling is sorted pretty much. If you compare it with boxing, wrestling का scoring system is very sorted. Wrestling is pretty much sorted. तो अभी wrestling में वही ना, the team going to Asian Championships is very young, and Ravi is injured, Bajrang is not playing, so it will be very interesting tournament देखने के लिए. Oh, Ravi is injured. Ravi is injured. So Aman Sherawat is going, the under-23 champion. Oh, Aman. Also, यहाँ पे World Wrestling Championships में Ravi lost very unexpectedly. I remember first round या कुछ. So you know the thing with the wrestlers is ना, the thing with games like boxing and wrestling is it's very छोटे short time तक ना, तो आपको comeback करने का time भी बहुत कम मिलता है उसमें. So there are very few like they're like this is Bajrang and Ravi's style generally कि they come back usually. Like Bajrang ka, if you notice the bronze medal he won,
He came back Yeah. 6 down, 4 or 6 down. And हाँ. that is with very, very, very few players who do that. Because you don't get that time. Once you are down, you are down. So yeah, वही चीज है. हाँ, तो देखते हैं, मतलब प्रीति भाई कल जाओगे तो कुछ IBA IOC वालों को बोलो आप बॉक्सिंग का कुछ करो, क्या कर रहे हो आप करके. यार यहाँ तो the thing in India is that India में this is like kind of the biggest thing that when you ask relevant questions you are banned. So relevant questions का अभी तो it's Oh, we have an update. By the way, Busena Surmaneli नाम था उनका. Yeah, she is not playing some. So Surman Ali was in the initial draw. I'm not sure of the latest draw because latest draw मैंने भी नहीं देखा है क्या कौन कहाँ गया. And BFI was tagging us on tweets, mentioning a lot of crores and crores of prize money. So is it? Yeah, really that is true? true. That is true. That is true. कौन This is कौन फाइनेंस कर रहा है? Oligarchs of Russia. नहीं. हाँ, this is financed by a Russian company, Gazprom, and that is Oh, one of the Gazprom. biggest contention points. Gazprom, which is so Umar Kremlev is Russian, the president of IBA, and it's the Russian money all along. So you understand. Bro, Gazprom is like everything that the US stands against. Exactly. Shit. Oh my god. That's why the boycott and all the controversies. IOC has been very, very clear. So like this is not a news yet. It might be news, but कुछ दिनों में बाहर आएगी कि IOC IBA में और लफड़ा चालू हो गया. आज तो कुछ चीज तो मैं सामने से देख के आया हूँ. A lot of other stuff happening between IBA and IOC. So most probably I think we can say that कि Olympics में बहुत बुरा हाल है अभी boxing का when it comes to going to Olympics. Acha, Turkey has changed host card. They are sending young team after he announced no. Oh, okay. No, the thing is ना कि see, बॉक्सिंग निकाल दो. हम लास्ट टाइम ये बात कर रहे थे, बॉक्सिंग निकाल दो. ऐसे कॉमनवेल्थ में सब निकाल रहे थे. बॉक्सिंग निकाल दो, आप रेसलिंग निकाल दो. इंडिया वोंट हैव एनीथिंग लाइक टू प्ले फॉर. वेरी ऑनेस्ट. देखो डांसिंग आ रहा है, अब डांसिंग आ रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ला दो, गिटार वायलिन सब. पियर दे कोबरते बोले थे कि मजा चाहिए अपने को, तो आप डांसिंग के साथ वो भी ला दो. और ये सब मेजर स्पोर्ट्स यूरोप. सी, देयर इज नो नीड टू रिमूव रेसलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज गुड. So there is just reduce the number of events in swimming, man. Come on. Swimming is so insane. Like World Aquatics has gone nuts after gaining some popularity. नहीं, पॉपुलैरिटी है भी नहीं ना. लोग स्विमिंग कर रहे बराबर है. आप 50, 100, 200, 400, 800, 1,500 आपको डिस्टेंस स्विमिंग भी करवानी है. आपको फिर इनका रिले करवाना है, उनके बाद इनको मेडली करवाना है. 50 into 4, आपको 100 into 4. Like you just see, it is so atrocious that each and every stroke in swimming, there are 4 strokes in swimming, each and every stroke has so many disciplines, and it's the same person winning 4 to 5 medals. And that is why Olympics records are very skewed when you go to history, because there are events, and the thing is that these are core events, so you can't remove them also. ये सारे के सारे the aquatics वाले you mentioned. Core is fine. See, swimming is a very brilliant sport, so that's a water sport. I accept that, but there should be a limit. No, if you are doing short distance swimming, either keep 50, 100, either keep 200, 400. You are having 50, 100, 200, 400 everything, which does not make sense to me. So अगर रनिंग में भी वो लोग 60 मीटर डैश लाएंगे, फिर 100, 150, 200, 250, समझ रहे हो ना कि that's the thing, that's the biggest problem I have with swimming. And also another thing, मैं इंडिया से और यहाँ पे कोई कर नहीं पा रहा, इसलिए वो और दुख. India is showing some good signs, or वो श्री हरि नटराज. But still, he might be able to win a Commonwealth medal, but Olympics, like Olympics, so American domination is too much. The thing with the problem with India as a country, like overall, this is a cultural problem that we don't have culture, we don't try to develop culture, and then we expect results out of it. So until unless you have a culture, you can't have result out of it. ना culture चाहिए आपको. You need a culture which prevails there, which sustains in the country, जहाँ लोगों को पता हो चीजों के बारे में. And the thing about Great Britain, I'll take the example of Great Britain here. So Great Britain में ना people try out different kinds of sports, and the reason why they can try out these sports is because of the sporting infrastructure. Okay, so let's say you develop a school or you develop a college, and you have
10 to 15 sports there. So hockey is more prevalent in Great Britain than it is in India. Okay, we have a great team, that's fine, but it's still concentrated in Odisha, parts of Jharkhand and Punjab. India's grassroots hockey is dead. There is no grassroots hockey in Yeah, India. There is no. Dilip Tirke launched a program yesterday only about grassroots hockey. But still, like if you see, there is someone is just a second. Yeah, so what basically Naman was saying that was कि ग्रासरूट का होना बहुत जरूरी है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हॉकी का. सो व्हेन इट कम्स टू हॉकी, इंडिया में पंजाब से बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट द पंजाब हॉकी बॉडी, स्टेट बॉडी जो है वो बैंड है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर इलेक्शंस. सो अभी दिस इज द सिचुएशन इन इंडिया. द स्टेट विच इज प्रोवाइडिंग यू द मोस्ट प्लेयर्स, वहां का स्टेट जो है वो बैंड है, स्टेट बॉडी जो है वो बैंड है. So these are the things which need to be removed. And see, it's fine. See, as an Indian, I also like watching cricket a lot. I've been watching cricket since childhood, and that won't go away as an Indian. But if everyone, each and like crores of people are aspiring to become cricketers, then that's not going to happen. That's simply not going to happen. And if those crore people, if they start aspiring to do different things, like pursue different sports, then only we are looking at some productive output. And that has been happening in athletics, to be very honest. Seeing coming up in athletics. Yeah. So Vivek has mentioned a point that we have badminton culture, but we never produce players like Dan Chong. So I'll tell you, Vivek, what the problem is. यहाँ पे problem ये है कि every sports need infrastructure and investment. Indian badminton is growing because अभी investment हो रहा है सही जगह पे. अभी culture develop हो रहा है. सात्विक चिराग का आना, अचानक से people are interested in watching men's doubles and women's doubles. Why? Because Satvik Chirag, Trisha Gayatri are making people watch it. Abhi ke time pe. There was a gap after Gutta and Ponappa, if I'm not wrong. Naman, correct me if I'm wrong. Gutta and Ponappa, I don't think we had a dominant women's doubles pair, right? भाई dominant कहाँ से आया? पैर तो था क्या? हाँ, तो भाई. So my point is that. So a lot of it has to come from that thing also कि infrastructure, investment, ये सब भी बहुत important है. Like नमन ने example दिया था Great Britain का. Along with what they do at grassroots level, Great Britain uses sports science brilliantly. There is a reason cycling they have been so dominant, and Great Britain was not a dominant sport country in cycling. They took some 7 or 8 years, I don't remember the exact number, sports science को use किया, players पे invest किया, invested money in research, and look where they are now. So these are the things, you know. It was a point you mentioned. So sometime around last year, I was looking to do masters in sports. Okay, so when I went to colleges of Great Britain, they have courses. I'll tell you the kind of courses they have. They have sports nutrition, they have sports media, they have sports management. Performance sport analysis is different, sports technologies is different, sports psychiatry, sports physiotherapy. Okay, so I was interested in sports analysis. So what is sports analysis? So let's say an Indian badminton player is playing, okay, or an Indian boxer is playing. They have a coach. The coach is a person who has played the sport before and knows more about it than we people do. But at the same time, they have another person who is actually analyzing. So when we are commentating, so when you have noticed that when I'm commentating on a singles or doubles match, I keep telling you guys कि यहाँ forehand पे ये कम मार रहे हैं, या he should try exploiting forehand or backhand. And they actually have dedicated people to do that for each and every sport. So that's the difference, and that is what I'm trying to mention here. Ki India needs to bring more and more people like this. And the reason why I'm like hesitating to pursue this degree is I don't want to better the sports in Britain. मेरे को British sports पसंद के लिए और अच्छा नहीं करना है. मुझे वापस यहाँ के करना है. पर यहाँ के मुझे कोई करने देगा नहीं. The biggest difference is British sports की यहाँ के मुझे कोई करने देगा नहीं. So that's sports science is the biggest difference between these two. So Naman, what you mentioned, so I'll tell you one उसका live example था India Open. यही दिल्ली में वही जहाँ बॉक्सिंग हो रहा है वहीं पे हुआ था. I was there covering it. And so all these मलेशिया, चाइना, जो जितनी भी बड़ी बैडमिंटन कंट्रीज है ना, सबके 6 कैमरा लगे हुए थे और उनका एक प्लेयर खेल रहा था तो उसको वो 6 एंगल से रिकॉर्ड कर रहे हैं
और सब ऑडियंस के साइड पे जहाँ पे खाली था वहां पे, या मीडिया के पीछे जहाँ पे हम बैठते उसके पीछे लगे हुए थे, and they were recording the whole match and I asked them what is this for, so they were like कि we will do the analysis, हम उनका फ्रंट कोर्ट एनालिसिस करेंगे, हम उनका बैक कोर्ट एनालिसिस करेंगे, हम उनका नेट एनालिसिस करेंगे, हम उनका साइडलाइन एनालिसिस करेंगे, and that's what they have been doing. And I asked them कि कब से कर रहे हो, तो they said we have been doing this for past 15 years. So that is the culture I'm talking about, कि वो 15 साल का रिजल्ट है, those 15 years जो 15 साल पहले जिसने भी स्टार्ट किया होगा या जब भी स्टार्ट किया होगा, that is what is transpiring into results now. Yeah, and so this is the biggest difference, that countries have started embracing technology, and so even we had made a video, we had done a interview of a pro volleyball league ke physiotherapist, and how he mentions ki physiotherapy kitna important. Neeraj always has a physiotherapist with him. So Ishan. yeah, and see, I was talking about colleges in England, and Neeraj was training at Loughborough Institute, okay, Loughborough University, which is considered as the best sports university, and all the courses I mentioned were there. So yeah, this is the biggest difference, and I always feel about water sports in India कि sports India में बहुत ज्यादा है. मतलब आप वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो आपके पास, एज आई मेंशन अर्लियर इन द फर्स्ट लाइव एज वेल, वी हैव वाटर बॉडीज एवरीवेयर. कि आप ऐसा नहीं हो कि आप यू आर लिविंग इन अ डेजर्ट एंड यू डोंट हैव वाटर बॉडीज. एंड पीपल, so even in Pune where I stay, there are couple of colleges where students are actually taking up um, water sports and they are preparing for it. So if more and more kids start, so if one college is taking initiative, two colleges start to take that initiative, we'll have a bunch of more players, as happens in Korea, South Korea mein. South Korea mein, they have a huge pool of players who is practicing archery, and they'll pick the best 5 out of them and they'll train them to a higher level. So until and unless matlab cricket, see, cricket fanaticism is okay, but aspiring to be cricketers, everyone aspiring to be cricketers is not going to help. And हाँ, आप लोग बोलते हैं कि हम we talk कि we say हम cricket नहीं देखना चाहिए ज्यादा. Please watch cricket. I love watching cricket. But if you want a sporting culture to develop, that is the first base. आप ऐसा ही एथलीट उगा नहीं सकते कि आज हम इसको उठा के आज एथलीट बनेंगे, वैसा नहीं है. आपको पहले सभी लोगों को स्पोर्ट्स खेलना है और फिर जाके that is a sporting culture. And Priti, you might know Netherlands is one of the best examples of this. True. Netherlands ही नहीं, मतलब Netherlands तो you mentioned right, you go to USA has this college culture. अरे यार, हमारा कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट तेजस्विन शंकर यूएस जाके क्यों रह रहा है? क्योंकि उसको रेगुलरली एथलेटिक्स खेलने को मिल रहा है एट कॉलेज लेवल. वो अपने कॉलेज को, एंड दैट मतलब द पॉइंट इज कि साल भर अगर प्लेयर खेलेंगे तभी तो दे विल इम्प्रूव एंड दे विल नो अबाउट देमसेल्व्स ना. फॉर एग्जांपल इंडियन हॉकी की हमेशा बात होती है, व्हाट डज इंडियन हॉकी डू अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग इंटरनेशनल मैचेस, सॉरी क्रिकेट आई एम सेइंग इंटरनेशनल मैचेस. कुछ नहीं करते, दे डू नथिंग. देयर इज अ नेशनल चैंपियनशिप जो कि 3 हफ्ते में खत्म हो जाता है. देयर इज अ इंटर डिपार्टमेंटल चैंपियनशिप जो कि 3 हफ्ते में खत्म हो जाता है. HIL वाज देयर, इट इज गॉन. And what does Belgium and Germany and Australia do? They have a club hockey culture where the players play. They play regularly. So there are so there are like in Netherlands में actually there is a club, like you watch football, आप football देखते हैं Netherlands का जो Eredivisie है, मतलब जहाँ पे PSV Eindhoven वगैरह ऐसा टीम्स खेलते हैं. Similarly, they have a hockey league which is more famous than the football league in Netherlands. Amstelveen वगैरह के people are actually fans. हमारे यहाँ जैसे fan culture जो है leagues के लिए या IPL teams के लिए, वहाँ पे hockey के लिए वैसा fan culture है. So we are going to do a let's talk on this so that you guys can comment in community post that we need a league for hockey in India right now. Because we need a bigger pool of players to choose from. We have seen a visible difference from the World Cup, and now younger players have come in. Selvam, Karthi, Pavan has come as a goalkeeper. Then we have had, I guess at the front, Abhishek is playing. So a lot of Jugraj again. Jugraj is back. So we have taken young players, and those young players have created an impact. So bigger the pool I was talking to Pavan day before the final Australia wala game se pehle. I was talking to him. And that's what I asked him कि what do you do when you are off season? He's like कि सर ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, या तो हम मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं साई बैंगलोर में, या तो हम घर पे होते हैं, मोस्टली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. बट माय पॉइंट इज कि ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला इफ दे डोंट प्ले मैचेस रेगुलरली.
What will you do in training? Training is what? It's a drill of 1 hour and you go away. You don't play that one. वो एक घंटे का match experience नहीं होता है. So these are the things which really need to come out अच्छे से. एंड हॉकी का तो आई मीन शहबाज अहमद वेंट टू नीदरलैंड्स पर 4 साल के लिए पाकिस्तान छोड़ के, द मैराडोना ऑफ हॉकी, बिकॉज ही न्यू कि पाकिस्तान में हॉकी कल्चर वाज डाइंग बैक देन, एंड दैट इज व्हाई ही वेंट टू नीदरलैंड्स. दैट वाज द रीजन. एंड वो 4 साल वहां खेल के आया बिकॉज ही लव प्लेइंग हॉकी. सो अभी वही चीज, इंडियन प्लेयर्स कांट गो. Why can't they go? Because they're not allowed to. So Oh my god. that's the thing. Oh my god. Oh my India god. doesn't allow. Shit. Okay. So- I did not know this, and I'm actually very disappointed. Now imagine, so the thing is, again, our players are world class. Manpreet definitely. Singh, if you watch that guy dribbling a ball in midfield, he is a magician when it comes to stick work. PR Srijesh, everybody knows. And like these guys will walk into any team in those clubs, वहां पे तो आधे players international होते भी नहीं है, but they are not allowed, they can't go, जो भी reasons है. And people will go gaga about Lionel Messi playing football and all. But in Bhubaneswar 2 months ago, I was there in Bhubaneswar. I watched Manpreet Singh play live, and that guy is a magician. So those who are not watching hockey currently, they should please watch India's match, because you are losing out on not experiencing performances by a certain magician. And he is actually the magician of Indian hockey. He has incredible stick work. Okay, so and this is a good opinion. I definitely agree with this. मैंने प्रीतिश ने इस पे बात भी की थी कि युवराज सिंह should have played the World Cup. Like काफी ज्यादा हम लोग disappointed थे that even after who was injured, I guess it was Hardik was injured. Hardik got injured. Yeah, so even after Hardik was injured, we did not bring in Jugra. Of course, like for like replacement नहीं था, but we knew that Harman Singh, again Harmanpreet, great player, but wilted under pressure. So it happens with the best. Harmanpreet के साथ भी वही हुआ. Harmanpreet was made captain just before World Cup, if you remember. It just happened. Yeah. I was shocked. And so again in Odisha, I meet Roland Oldsman, who has worked with Harmanpreet when Harmanpreet was a kid. Okay, जब Roland Oldsman, India का पहले high performance director था. Oldsman के अंदर में that team won Junior World Cup. So Oldsman just tells me one thing, कि why do you think I never made Harmanpreet a captain? And I was like, okay, I have my answer. I don't need to tell anything. And which is true, that he actually buckled up under the pressure, and it was just too many things on his head. He's your defender. He's your first penalty corner specialist, like first drag flicker, and then you make him captain for the home World Cup. So just, and you have Manpreet Singh, who has been leading the side since a long time. You have PR Srijesh, who was captain in 2016 Olympics. PR Srijesh was captain when half of the people were not even watching hockey in the dark days of Indian hockey. Yeah, so you have, and PR Srijesh does not have that kind of pressure if he's the captain, because he has been there, he has done that, he has seen everything that Indian hockey was, from the dark days to this. And to make Herman captain was a very bad decision, and everyone appreciates Graham Reid for what he has done. For my opinion is a bit different. Appreciate Graham Reid for whatever he has done till 2021, but again, I think, as someone has mentioned in the chat, Harendra Singh had a big part to play in it. And guy is super underrated. Guy's name has not been taken by anyone, but Harendra Singh is a major reason why this team was there. And after 2021, Graham Reid could have done something great with this team, but I'm super disappointed, because the reason why we kept losing to Australia and World Cup was very shambolic for us, in spite of having so much home support. And I watched India versus Wales, and we could have actually ended up losing to Wales in that match. So Wales was a team which financed themselves. And which the players in the Wales team, they playing hockey is not their profession. Their profession is working. So one of them might be a banker, one of them might be a hairstylist, and at the same time they are playing hockey by financing themselves. So losing, like almost winning against such a team, is not very acceptable. And now see, just Graham Reid has left, and the interim coach, as you mentioned, Preeti, is that David John has taken charge, and like the team has showed significant improvements right now. People are belittling. So I saw on Twitter that people are saying this is Australian C team, D team. It's not that team. Half the Australian squad from World Cup is playing here. I want to
I want to come to this. I want to, because this is such a false narrative. Let's be so honest about it. Every team is experimenting. Dilpreet is playing in midfield. Manpreet has moved to half back. Your eight players from that squad are not here. From Indian team, 8 players are not here. That's practically half of your team. How is this not a B Indian team? This is a B Indian team. Karthi Selvam, Krishan Pathak is not there. Mandeep Singh is not there. Akashdeep Singh is not there. But people don't. And if you, anyone who has watched the game, India was defensively compact, literally compact. Germany played with the exact same lineup, barring 2 players, जो जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता अभी 2 महीने पहले. मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं उधर गोंजालो पहला ग्राम्बुश दोनों दिख रहे हैं मेरे को कैसल पे. दोनों आप कैसे ग्राम्बुश बोल सकते हैं? brothers. हाँ. Oh yeah, Grambush brothers. Yeah. So one of them is, I guess, their other penalty corner specialist, Mark Grambush or someone. I don't remember the name. Matt So, Grambush, captain. Captain. So that's the thing. People are like on Twitter or on social media, people are saying anything, which is absolutely not true. It is India who is playing with the least players from that World Cup squad, to be honest. Just so you don't see Blake Govers in the squad does not mean that it is Australian L team or W team or Z team. Like that is very hilarious, to be very honest. And Pritish, there is a question for you. I won't be able to answer that. So your thoughts with Harendra Singh. So yeah. So what I'll tell is कि I had a chat with Harry also. So that article is also up on the website पे भी है वो article, हरिंदर सिंह ने क्या बोला था. So I asked him that so basically Harendra Singh right now is at USA. He's developing the grassroots system and the coach of the men's team out there. So now coming to India duty, he said simply one thing: if I want to come for a longer time. उसको longer rope चाहिए. He wants to develop the system here. And अभी Harendra is the only Indian coach who has the top coaching tier में है वो. There is no other Indian coach who has it at the level of Harendra Singh. He's in USA, no? Yeah, he's a USA. Yeah. So USA is he men's coaching some team in USA? No, yeah, he's USA men's team head coach and he is developing the grassroots system there. So that's what he said कि India में तो सब कुछ plate पे मिलेगा मेरे को if I come as a coach. वहाँ पे वो नहीं है. USA में is developing everything, like he's working with college teams also. He's working with school teams also, and then working with the national team also. Nice. So yeah, that is there. Nice. So मतलब हरेंद्र सिंह हम अपनों को ही तो लेने नहीं वाले. हमको बाहर से कोचेस चाहिए. We have taken Craig Fulton now. But I think he has done well with Ireland. Fulton is the guy behind Belgium's rise because he has coached at different levels, you know. Fulton was as assistant to Shane McDonald, if I'm not wrong, in 2018 World Cup. So Fulton has coached a lot of Belgian clubs and took them to championship. Red Dragons को ही जिताया था उसने. Yeah. Belgian club hockey में भी काफी किया है. I was checking that out as well. We have a question I want to ask. Yeah, go ahead. So I was saying कि Rishabh, see, again, we need to understand one thing. India is a poor country. तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि इंडिया एक बहुत ही पुअर कंट्री है. And when people say ना कि badminton, see, tennis, squash, these are rich sports. Honestly, while growing up, I couldn't afford a squash. इतना expensive था वो. I'll be very honest about it. So, like for example, diving and swimming, you are saying. Diving and swimming, you know, they need high quality infrastructure. And एक देश जहाँ पे काफी सारा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, यू कांट एक्सपेक्ट कि ये कल्चर बन जाएगा बिकॉज स्विमिंग एंड डाइविंग के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जहां लोग जाके एक्चुअली सीख सकेंगे, कर सकेंगे. सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि a lot of things depends on the economic condition also, which is sports is like connected to economics, so it's always there. So I think that will be my point on that ki why diving culture nahi hai. So diverting a bit from economics and coming to the basic what I see in my life. So I live in a tier 1.5 city. I won't call it a tier 1 or tier 2 city, but I live in a kind of decent city in the country, and we have swimming pools. Okay, the problem is there is an Olympic swimming pool, uske baaju mein diving ka section hai. Diving section has been closed since 8 years because they feared that people will fall off, which again makes sense because in India swimming pools are made only for commercial purposes, and if you are going to a swimming pool for commercial purposes, there is absolutely no chance that
even a single high performance athlete will come out of that. So first of all, the basic thing needs to be कि हमें एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाना है जहाँ पे सिर्फ एथलीट्स आएंगे, जो इंडिया में होता नहीं है. तो जब भी एक शहर में 5 ऐसे स्विमिंग पूल बनेंगे एंड पेरेंट्स का मेंटालिटी चेंज होगा कि बच्चों को यंग एज से सिर्फ स्विमिंग में डालना है, तब तक डाइविंग की आप बात मत करो. डाइविंग उस तब तक डाइविंग तो शुरू होने नहीं वाला तब तक. एंड सी चाइना का ऐसा दबदबा है ना डाइविंग पे, डाइविंग यू नीड रोबोट्स टू डू डाइविंग. यू इट्स वेरी इजी, यू नीड रोबोट्स. But again, we have someone like Tom Daly who comes from GB, Britain, and he has won a medal here. What a So story! again, What a story once he has. unless This is a story unless and means until unless and until you make swimming very popular, you have dedicated centers for swimming, which is not the case. See, we have one very dedicated center in Padukone Dravid Academy in Bangalore, and it has produced results. It is slowly producing results. Nataraj has come out, so it is slowly producing results. But unless and until in each and every big city you don't have, or even in small cities, if you don't have these dedicated pools, which are meant only for uh, training athletes and not for the summer vacation में 10 बच्चे मूतने आएंगे या 100 बच्चे मूतने आएंगे, that वो वैसे तो फिर कुछ होना ही नहीं है. That is, so unless and until you become very good in swimming, after that the step for diving comes in. That's easy, 20-25 years. So that's the answer to the diving question. What happened to Indian cycling? Again, whatever Priti said stands here. Velodrome बनाना बहुत महंगा है, जगह भी एक काफी वेलोड्रोम चाहिए. है बस, दिल्ली में, एक केरला में. एक दिल्ली में एक वेलोड्रोम है. हाँ, केरला और में. हमारे जो भी साइकिलिस्ट है वो अंडमान निकोबार में साइकिलिंग करते हैं, वहां से सीधा दिल्ली में आके वेलोड्रोम में करते हैं. दैट्स द करंट कंडीशन ऑफ इंडियन साइकिलिंग. So first of all, to create a culture for these sports, high level infra is needed. जब तक इंफ्रा आएगा नहीं, इनका फेडरेशन इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा नहीं. कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट स्टेप. कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट अभी ये जो अभी मैं तो क्रिकेट का एग्जांपल लूंगा बिकॉज दैट्स प्रिवेलेंट एवरीवेयर. जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स जो है, जेएसडब्ल्यू while investing in Delhi Capitals, if they take out a chunk, I'm just taking it, or any brand, any corporate brand involved in any sport in India, especially cricket, if they take out a chunk and they build something like a velodrome and they pick a bunch of athletes, again it's grassroots. Take athletes from grassroots, have a team of 5 to 7 people, as I mentioned, physiotherapists, psychologists, nutritionists. बहुत Make कुछ है, this बहुत. dedicated team and let them work on a batch of students. It's like a science project. See, sports is a science project, and F1 is the biggest science project of all. So each and every sport is to be considered as a science project right now because other countries are doing it. It's not 1912, it's not 1924 कि कोई भी जाके कूद के आ रहा है. It's not England dominating the all England badminton championships in 1930 where only they are playing against USA. They are playing against their own colony. ऐसा तो हो नहीं रहा. तो you are, everyone is trying their best, you also need to try the best. उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा. So that's another thing. So cycling and diving are in the same zone in terms of infrastructure and all. And the reason why we are flourishing in athletics with so much less infrastructure is athletics does not require infra, at least at the base. तो ज्योति आरा जी का हमने एक वीडियो डाला था. प्लीज सर्च ज्योति आरा जी द ब्रिज. यू विल फाइंड आउट. आई रियली वांट यू गाइस टू सी दैट वीडियो. मैंने स्क्रिप्टिंग करके वीडियो बनाया था. वी हैड एन आर्टिकल. दीपांकर आई गेस हैड टेकन एन इंटरव्यू. सो लाइक if we had decent grassroots system, we would have had 55 to 60 Jyoti Araji still now. Even we had from Maharashtra, we had Lalita Babar previously. So साबले, So- I went to अविनाश साबले's house. अविनाश साबले के गांव में अगर बारिश हो रही है तुम नहीं जा सकते हो. I went there and you can't sit outside, इतनी धूप होती है. It's a drought affected area. सूखा पड़ता है वहां पे. अविनाश साबले के बस्ती में अविनाश साबले का घर जो भी बन रहा है, दैट इज द फर्स्ट पक्का मकान. अविनाश साबले की बस्ती में 15 घर में एक भी पक्का घर नहीं है. फर्स्ट वन इज बीइंग मेड बाय अविनाश साबले. और साबले के घर में बिजली आ रही है क्योंकि उसने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता. बाकी किसी घर में 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती है. सो अगेन दी एथलेटिक्स में ये स्टोरीज आती है. Naman rightly mentioned that athletics is something where you don't need a, like, to start off you don't need anything. And Sable was rightly picked up when it was required कि उसको कोई देखे स्पॉट करे और लेके आए. He was picked up at the right time. And like Jyoti Ara ji comes from the similar kind of area जहाँ पे लड़कियों की शादी कर दी जाती थी after 10th or 11th. So again athletics में वो चीज हो जाती है because infrastructure. But जिस sports में infrastructure चाहिए वहाँ पे it becomes extremely tough to do anything without infrastructure. And like Pritish mentioned about squash or let's say tennis, these are expensive sports.
this can be only taken by rich people, and I stand by that, and it's fine. If you have rich people sports, that's fine. Golf, tennis, completely fine. These sports are not in Olympics. It's fine. So athletics, the best thing about athletics is anyone can take up athletics. But what I want to say कि लोग बोलेंगे कि what's the point of pouring so much money in sports and creating a sporting culture? The biggest point I feel, I ask this question to myself. Once you create a sporting culture, you make a healthy country. Right now, India is not good in terms of health. Yeah, People true. are people in India are very unhealthy. If you compare the metrics with other countries, in spite of those who are having money, ऐसा नहीं कि मैं जिनका financial condition is not that great, they are struggling, it's fine. But even for people who are having money, India is not great in terms of health. Once we create a sporting culture, once see, school से ये शुरू होना चाहिए. अभी someone was mentioning, I guess Chidambaram only in the parliament, we made a cutout video of him and posted That it on our was channel. some guy from some other party, not Chidambaram. I'm not sure it was No, Chidambaram, but it was Chidambaram a also. Chidambaram also. हाँ, Chidambaram हाँ. also, the son of P. Chidambaram, he was also अच्छा, talking right, about right. sporting first. Yeah, हमने वो भी वीडियो डाला था उसके बाद. I know previous Hmm. वाला it was someone else. Hmm. So हाँ, wait, that was the core. That was the very core point of it. कि why you need each and every sport to have different kind of each and every school to have different kind of sports. So yeah, and the reason why Pritish and I are talking about all these sports and everything now because we actually have an audience today. अगर हम लोग ये special live करते थे तो कोई आता नहीं था. आता नहीं था. Because badminton is the only crowd puller. All or Olympic events or Commonwealth events. So thank you guys for joining today. प्रीतिश को कल सुबह उठ के बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाँ, जाना है. actually. मैं तो सोऊंगा, मेरे को तो क्या है, मैं तो सोऊंगा. But Uh, yeah, Pritish has to go. It's been a long day today. Four hmm, matches we won. Coming back to badminton, four matches we lost. One match we hmm. won. So Teresa Jolly and Gayatri will play tomorrow or today only. It's past midnight. Thank you for the 50, 70 odd people who stayed with us right now and Yeah, listened guys, to our and thoughts. come for these kind of lives. Even we want to talk about these things. We also Yeah, want to discuss these things with you. So एक ऐसे जो कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट होगा ना, तभी ये चीजें आगे बढ़ेगी और लोगों को भी पता चलेगा, लोग भी जानेंगे. So having such conversations is very important, especially on a platform like YouTube or Instagram or Twitter, wherever you are. So please join us whenever something like this comes up. We yeah, and absolutely love talking to you बस guys. बस बैडमिंटन लाइव के लिए मत ज्वाइन करो. Please join Uh, us in other sports as well. Don't join the lives, it's fine. We are doing a lot of content. We are putting in a lot of effort. Pritish personally is going to random places in India, as he mentioned, Ravina Sable's house somewhere in rural Odisha in Haryana as well. I am sitting on my chair and reading a lot of stuff so that I can speak with you guys. So please keep supporting us. Thank you so much for joining. We'll have Teresa and Gayatri tomorrow. So please support us. Please come for them and support them in big numbers. Thank you so much, guys. We'll call it a night today and we'll meet tomorrow. It's been a great live. Thank you. Good night.